Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me. Welcome to the Nifty Expiry. I can see काफी सारे लोग already आ चुके हैं. We will start the session in next 2 minutes. I can see काफी सारे questions भी आ रहे हैं. We'll wait for more people to join in. But before that, I hope I am clearly audible and visible, guys. I hope you can see me. Everything is okay, sir. Great, great. Thanks for the confirmation. Shivangi ma'am will be joining us in a minute and then we will start this. Hello, Jay. It's Khush. Hi, Khush. Hi. Hello. Good afternoon. Thanks, Vishnu ji. Thanks, Rambilas ji. Looks like the last was Nifty stuck in range. Yes, Sanjay ji, Khush, missing Chandan sir. Chandan sir will be joining us in the next Nifty monthly expiry, guys. So no need to worry. And let me just check in with our expert Shwangi, and then we will start the session. Ma'am is here. Ma'am, I have sent you a request. Was last 5 session profitable? Yes, Kush, we had 4 profitable sessions and 1 with no trade. So that is the update. Please don't spam Devendra ji. We will take your queries when we have time. Right now, we are not taking up any stock queries. Shivangi ma'am, I have sent you a request to join the stage. Please accept and join in. हमारे लास्ट 2 एक्सपायरीज भी प्रॉफिटेबल थी विद आवर एक्सपर्ट अर्पित सर एंड विद आवर एक्सपर्ट apparently दोनों एक्सपायरी सेशंस अर्पित सर ने ली थी निफ्टी एंड निफ्टी दोनों हमारी प्रॉफिटेबल रही थी दोनों तो we had some losses. Hello Shivangi ma'am, can you hear me? Profit streak generally we have with her. कभी कभार वो streak टूट जाती है. Generally we have a streak right now. The streak is of 4 profitable session with 1 no trade. This is the ongoing streak with our expert Shivangi. You see her daily in different news channels, Motilal Oswal's pages, podcasts, reels, YouTube shorts, and a lot more. And she is a part of Chandan sir's team, जिनको आप सब जानते ही होंगे. So we are all set. For the people joining in for the first time, please note this कि जो हमारा afternoon session है, that focuses more around the expiry. So if we have time, then only we take stock queries or else we don't. जो हमारा morning session होता है, that focuses more around stocks. And also we have thousands of people joining these live sessions and asking questions. I try to take up as many questions as possible. ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन इग्नोर कर रहा हूँ या फिर जानबूझ के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, but the scenario is I can see so many questions coming up, I can take all of them. So I take the one जो काफी लोग पूछ रहे हैं and convey it to the expert. And ma'am, we are all set. You can share your screen and then we are good to go. And before moving on, I hope guys there is no echo and you can hear both of us clearly. You can just write it in the chat, that will be great. Great. Over to you, ma'am. Thank you so much, Anuj, and a very warm welcome to everyone. Happy Thursday. It's Nifty Expiry. आज के सेशन की अगर हम बात करें तो
पूरा ही रोलर कोस्टर राइड रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग वी टच्ड अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। कल रात को एक फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन था, हम 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट 50 बिप्स हो चुका है। तो उसका एक एक्सपेक्टेशन एक्सीड होने का कारण हमने देखा कि निफ्टी टच्ड अ फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑफ 25,611। बट इसके बाद हमने देखा है कि पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडेक्स हैड ड्रॉप्ड by more than 250 points from its intraday highs. So somewhere we are seeing that this pressure is going to continue in the market. और ओवरऑल अगर हम देखें तो कई बार इवेंट के पहले काफी एक सस्टेन्ड उसका इम्पैक्ट आ चुका होता है। आज इवेंट के बाद भी हमने देखा कि उसका जो इफेक्ट था वो बाद में भी देखने को मिला, बट पीपल हैव ऑब्वियसली बुक देयर प्रॉफिट एट हायर लेवल्स, जिसके कारण इंडेक्स जो है वो थोड़ी बहुत डिक्लाइंस में था। सो राइट नाउ स्ट्राइक पर से पिछले लास्ट 2 घंटे से हम पुट को ही ट्रैक कर रहे हैं, और उसमें एक अच्छा मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, पर स्विंग्स बहुत है। बिकॉज ओवरऑल अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, अगर आप वीकली बेसिस पे देखो या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखो, अभी भी पॉजिटिव है। और शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर जो है, यानी कि आर्ली कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, वो नेगेटिव हो रखा है। So when the broader structure is something else and the shorter time frame structure is something else, तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत स्विंग्स रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होगा एक सिंक में ट्रेड लेना। बिकॉज कॉल गिव अप कर नहीं रहा, कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो गिव अप कर नहीं रहा, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल टाइम फ्रेम विच इज इंट्रैक्ट। देख रहे हैं कि 25,350 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आज भी होल्ड करते हुए दिखा। एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो प्रेशर है, वीकनेस है, वो एक ऑफ कोर्स कंटिन्यू होते हुए दिखा सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में भी। बट समवेयर वी आर स्टेबलाइजिंग एट 25,400 लेवल्स। 400 अगर ब्रीच करता है तो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा पुट में, और एल्स वी जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज द मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल टुडे। एंड सिनेरियो हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड है थोड़े बहुत। यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है वो भी फंस रहे हैं, पुट राइटर्स भी फंस रहे हैं, यानी कि दोनों ही स्टांस काफी ट्रिकी हो जा रहा है मार्केट में ऐसे में। सो वील जस्ट वॉच आउट फॉर 25,400 मार्क्स। अगर इसके नीचे कंफर्टेबली होल्ड करता है तो हम पुट के साथ जाएंगे, और एल्स वील अवॉइड अ ट्रेड टुडे, right? So this is the stance for Nifty that we will be playing out for the next 1 hour. For strikes, right now I'll just tell you the strikes as well. I'm tracking around about 25,200 का पुट जो है वो मैं ट्रैक कर रही हूँ। 25,200 का पुट अभी 70 के आसपास चल रहा है। एंड ऑन द मीन टाइम आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग 25,600 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 90 के आसपास किसी भी साइड मोमेंटम रहता है तो हम उसको प्ले आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन इंडिया विक्स। कल के सेशन में सिर्फ मार्केट्स डाउन है, तो फिर इंडिया विक्स डाउन क्यों है? आज तो टेक्निकली इंडिया विक्स को हाई होना चाहिए, बट आई टेल यू व्हाट, कल एक हम फेड के आउटकम के एंटिसिपेशन में थे। वी डिडंट बेसिकली नो कि किस तरफ जाएगा। इंडिया विक्स काफी हाई हो रखे थे एंड पीपल positions as well for the to be hedged. तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स was signaling that, but today when the event is over, तो यहाँ पे एक कूल ऑफ देखने को मिला है। Now इंडिया इंट्राडे सेलिंग हो रहा है, इसलिए भी एक कन्विक्शन नहीं आ रहा है पूरी तरह पुट में, क्योंकि इंडिया विक्स इज नॉट सिग्नलिंग एनी साइंस ऑफ पैनिक हियर। सो ओवरऑल अगर आप नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से सोचो, नेक्स्ट वीक इज अ मंथली एक्सपायरी एज वेल, तो निफ्टी काफी पॉजिटिव है। पोजिशनल अगर कोई होल्ड कर रहा है तो यू कैन डेफिनेटली बाय एट दीज डिप्स एज वेल।
एंड द नेक्स्ट जो लेवल्स हम देख रहे हैं 25,650, 25,750 नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से. एंड फॉर सपोर्ट वन कैन लुक एट 25,350 एज अ इम्पोर्टेंट लेवल. बट इंट्राडे में आज के सेशन के लिए, आज के नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए हम देखेंगे थोड़ा बहुत प्रेशर है और वो प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे if the Nifty holds below 25,400. Let's quickly glance to what's happening in Bank Nifty as well. आज पूरा सेटअप जो है वो कंफ्यूजिंग हो रखा है. बैंक निफ्टी कल के सेशन से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है एंड वी सीन दैट heavyweight banking counters are clearly supporting this up move. पिछले 3 दिनों से लगातार हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग मूव देखा है. इस हफ्ते 12% ओपन इंटरेस्ट शेड हुए हैं यानी कि शॉर्ट साइड में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट जितने लोगों ने किया था 12% ओपन इंटरेस्ट जो है वो कवर होते हुए देखा है. तो ये शॉर्ट कवर जब हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग जब हुआ है, यहाँ पे ये तेजी इसलिए देखने को मिला और हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लेवल्स टच किए हैं बैंक निफ्टी. सो ऑफ कोर्स दैट इज द स्टांस फॉर बैंक निफ्टी की बैंक डिक्लाइन यहाँ कंटिन्यू होगा. मार्केट का जो ब्रेथ है थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है. इस कारण से बैंक निफ्टी हायर जोन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है. बट द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव. हेवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स आर होल्डिंग इंटैक्ट. सो वंस द मार्केट स्टेबलाइजेस, यहाँ पे भी हम 53,500 और फिर 54,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक पर्सपेक्टिव के लिए. एंड सपोर्ट is placed at 52,650 levels. This is an important support. So this Ma'am, is the... can you please repeat the Nifty Strikes? Yes, so Nifty हम ट्रैक कर रहे हैं 25,200 का पुट यानी कि 25,000. Okay, just 1 minute. I'll just refresh my page. I think there was some preview issue. Yeah, so हम ट्रैक कर रहे हैं 25,500 के पुट को जो कि कम से कम अभी 9,500 के आसपास चल रहा है. एंड इन द मीनवाइल आई एम आल्सो ट्रैकिंग अ कॉल 25,300 का कॉल के ऑप्शन को भी हम ट्रैक कर रहे हैं. So both these strikes are on radar and we'll see कि किसमें एक movement अच्छा किस side हम biased है. So 25,400 will be important level to watch out. अगर ये hold करता है तो फिर हम trade लेने से थोड़ा रुकेंगे. But if it reaches these levels then we can go for put side. So 25,500 put and 25,300 call is what we are looking at right now. Got it, ma'am. Okay, one stock which is looking quite positive to me is Titan, which is holding on with strength in such a kind of market also. पिछले 10 दिनों के डेली फ्रेम में 10 दिनों के कंसोलिडेशन से निकलते हुए नजर आ रहा है टाइटन. And the good part is that seasonality wise also this stock tends to do good in these months to come. So Titan is one stock which one can look for. तो ये आप trade as a BTST भी ले सकते हो. So Titan is one stock. So यहाँ पे टारगेट्स जो है वो राउंड अबाउट 3900 के बनेंगे. 3900 के टारगेट्स के लिए आप टाइटन देख सकते हो, राइट? And the stop loss will be 3720. 3720 is the stop and 3900 के टारगेट्स के लिए आप टाइटन को देख सकते हो, right? So this is a stock which is looking quite positive. Hello everyone, I'm just going through the messages now. बहुत सारे warm messages मेरे देखने को मिल रहे हैं. Thank you so much guys. आप लोगों का जो प्यार है, जो support है, it just keeps us sailing through in such kind of a difficult market as well, right? और हम अनुज के साथ यहाँ ट्राई करते हैं कि हम आपको अपनी कन्विक्शन आइडियाज ही दे. इफ वी आर नॉट श्योर, आपने कई बार देखा होगा कि हम ट्रेड ना देते हैं
ताकि आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. सो टुडे इज सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ डे, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी ट्रेड मिले हमें, even if it's a small swing, we'll try to capture that. Okay, Rohit is saying Titan is good for long term. So Titan, of course, एक portfolio stock भी है. And Rohit or any other, if you're holding it for the long term, it's a very good stock. You can keep holding. But अभी फिलहाल जो fresh breakout देखने को मिल रहा है weekly basis पे भी और daily basis पे भी, that makes it a perfect trend for a short term trade also. So आप अगर investment portfolio में रखे हो, so you can keep it for a longer time frame. And if you are doing trading also, the stock is coming out immediately from its range. So that wise also it looks good. Right. हमने फेड का जो इंटरेस्ट रेट्स का डोमिनो इफेक्ट था हमारे मार्केट में, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं. And see, nowadays market is actually very smart. Event का अब जो outcome था या event का जो expectation था वो अब fizzle out हो गया है. तो हम अब नहीं देख रहे कि इसका कोई अब और असर पड़ेगा. But yes, the effect has already been seen in the morning trade, and we've almost आप अगर देखो निफ्टी का, I'll just switch to Nifty chart, and from the last 10 sessions हम दिख रहे हैं कि we've moved from 24,750 to 25,600 levels. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ 850 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने देखा है. एक्चुअली उससे ज्यादा ही ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग ने देखा है पिछले 10 दिनों में. सो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर इस जोन्स पे देखने को मिल भी रही है, सो इट्स कंफर्टेबल. But yes, it's important that it respects 25,350 for the broader term structure or the view to be intact, right? तो हम फिलहाल 25,500 के कॉल को ट्रैक कर रहे हैं. Nifty has dropped by 10 points, but this put option has moved by only 5 to 6 points. So I'm still tracking. अगर यहाँ पे हमें एक मूवमेंट कन्विक्शन के साथ नजर आता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे. If required, we can also shift to 25,450 call अगर वो मोमेंटम में है ट्रेड और हमें अगर परफेक्ट strike को सिलेक्ट करना है, then 25,450 will also be a strike that I'm keeping on radar. Right now this put is trading at 55, and इसको हम देखते हैं इसमें क्या movement आता है. Okay, so let me just switch to, this is the 15 minutes frame of Nifty. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि multiple doji formation के बाद वापस अब अटकता हुआ दिखा है market. Right, let me just quickly make it 5 minutes chart now. ये 5 minute chart है और हम देख रहे हैं यहाँ पे एक fresh breakdown है. But overall, whenever we've seen a breakdown in today's session, right? ये आज का session, यहाँ से आज का session start हो रहा है. For the so look at this chart. Whenever we see that एक support टूट रहा है, वहां से वापस हम देख रहे हैं कि pull back move देखने को मिल रहा है. So the markets are reacting in that way. It's a tricky day, but option swings है, तो हमें accordingly play out करना है. Right now, the put is again cooling off. कोई भी perfect अगर bounce आता है तो हम entry कर सकते हैं उसमें with a good risk reward. But from the last आप देख सकते हो 1.5 घंटे से मार्केट उसी रेंज में है. If I just make it 15 minutes, and you can just see from the last these few many candles, the market has got stuck in a range. और यहाँ पे कुछ रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कोई भी
वो नहीं मिल रहा है indication. So you just see how small or narrow this range is. I'm sure all of you can just see my screen and understand कि इतने narrow range में एक hero zero जैसे trade को निकालना बहुत ही challenging हो सकता है. But yes, we'll try. I'll just quickly do a 5 minutes chart. And 25 450 put is now near 55. So yes, this is the strikes. Okay, so Anuj, what we can do is market में अगर momentum आता है conviction वाला, we'll obviously shift to option trade. But in the meanwhile, I think we can take up some stock queries. But yes, before stock queries, I'll just mention a few sectors that are looking positive, ताकि आपके आधे questions वही यहाँ solve हो जाए. So some selective two-wheeler auto space stocks, capital good stocks and capital market के जो stocks है वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो exchange related हो, चाहे वो कोई broker related हो. So these stocks are looking quite good. Selective heavyweight banking stocks also looking good, and FMCG is holding well at the higher zones. So these are the entire sector pack that are looking positive. तो कई लोगों को ये question भी रहेगा. So I think most of them will be solved just by this. And now I think we'll take a few questions. Sure, ma'am. Let me just, before that, just mentioning we have 3 strikes on radar: Nifty 25,500 put, 25,300 call, and 25,450 put on radar. And coming back to the questions, just give me a second. Ma'am, Bajaj Finance, the first one. So Bajaj Finance, if you look at this stock, तो एक give up होते हुए दिखा था कल के सेशन में. But overall, financial space stocks have seen the up move. I think ये chart update नहीं हो रहा है. एक second, I'll just try refreshing it. Yes. Bajaj Finance. Yes. Okay. ये रहा चार्ट बजाज फाइनेंस का. एंड कल के सेशन के एक अच्छे मूवमेंट के बाद हमने देखा कि आज थोड़ा बहुत हायर जोन्स पे प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस स्टॉक्स आर showing strength in such kind of a market also. So if you are holding this stock, you can continue holding it for 78.50 odd levels. AVTPL, please advise entry levels and target. Okay, I didn't get the stock right, I think. AVTPL. काफी इसमें volumes low है, but this stock I'm seeing structure wise चलने से ज्यादा गिरता है ये. तो I would just suggest to stay away from this stock. Ma'am, your view on Zomato? Now Zomato is the all-time favorite stock, and अभी फिलहाल 4 दिनों के एक rest mode के बाद वापस अब stock निकलते हुए दिख रहा है. So Zomato is set for 300 odd levels. So 300 के लिए आप बिल्कुल यहाँ Zomato को hold कर सकते हो. And positionally even higher targets, but 300 is what we are seeing in region. RVNL bought at 299. So RVNL, I think we have a query every week now, and like I said, even for the last 3 weeks I've been saying this.
that रेलवे काउंटर्स में दम नहीं है, इनकी गाड़ी निकल चुकी है, तो प्लीज अब आप इस पे फोकस ना करो, because we are not expecting any sort of recovery from these levels. So stay away from these counters. And usually there is a setup that we've seen that budget के बाद 2-3 महीने profit booking देखने को मिलते हैं railway stocks में, which is the case every year. But हम budget हमेशा Feb में देखते हैं. इस बार हमने बजट जून में देखा, इसलिए अभी जो लिंगरिंग इफेक्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है. मैम your view on IRIDA. So talking about IRIDA, this stock has been moving in a very consolidated band from the last 10 sessions. And यहाँ पे हम देख रहे हैं कि follow up missing है, इसके कारण momentum नहीं build हो रहा है. Even though the stock is taking a support, but follow up is clearly missing over here. One can expect 240 levels, वहाँ पे एक resistance खड़ा हुआ है. Ma'am, your view on cross KROSS 200 shares bought at 245. This is a stock which I don't track. अच्छा, IPO है maybe इसीलिए. Okay. तो it's a very new stock, which of course we will not be able to hardly tell anything about it. Guys, please don't spam. I'm taking all the queries one by one. If you spam again and again, तो ऐसा नहीं है कि वो query हम पहले लेंगे. हम Oil India hold or sell. Okay, I'll just quickly give an update also. Nifty का जो 25,450 का put है, which we had started tracking near 50-55, वो अभी 47 के आसपास है, and the call is also at those level itself. 25,300 का जो call है हमने 100 के आसपास track किया था, वो अब 105 के आसपास है. So not more than 5-6 points का movement देखने को मिला है, both call side and put side. And you're seeing that जब हमने session start किया था 25,400 टूट रहा था, but अभी 25,410 के आसपास है. So index is only moved by only 15 to 20 points. तो इस 15 to 20 points में एक option trade निकालना काफी challenging हो जाता है. That is why our advice was that we'll stay light or stay away if there is no setup. So yes, that's the update कि यहाँ पे कोई momentum है नहीं, fizzle out हो चुका है. So I don't think we are going to take any trade, but of course stock questions, stock queries हम बहुत सारे solve कर रहे हैं, and of course जिनका नहीं हुआ है कल का भी session है guys, so don't worry, all your questions will be solved. And I can see few people spamming the Research 60 discount code. So for the people who did not attend yesterday, we had a 24 hours valid discount code for Research 60. I've shared it once again. The code is EXPR10, that is expiry 10, EXPR10. 10% off मिलेगा आपको. This is only for our community members and valid for 24 hours. This will be deactivated tomorrow. So हो सके तो आप आज ही अपना discount claim करें. I have shared the code. I have pinned it as well. And जैसा कि मैम ने बताया कि we don't have any trade. We have shared one BTST. So that is the only live trade which we have, and we'll take one or two more questions before we end. How about from Tata Motors? You can stay away from this counter because better placed are Hero Moto and other two-wheeler stocks. But auto may be selective, like I said, शुरू में भी selective auto stocks के साथ रहना है, selective banking counters के साथ रहना है. So make sure you have a portfolio of such kind. And ma'am, this would be the last CDSL for long term from Atul. So CDSL is quite positive. In fact, सारे ही exchange related या फिर आप capital market related stocks देख लो, काफी positive है. CDSL has been moving and shifting its pace higher from the last 1 week. Overall एक bottom out structure बन रहा है and quite positive and can continue holding this. आप बिल्कुल बने रह सकते हो. The next
targets that we're looking at is 1650 over here in CTSL, and 1425 would be important to watch out. So guys, that will be all. आज market में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए we have initiated no trade. We don't have any trades. Profit streak मैम की although चालू है, अभी हमारा loss नहीं हुआ है. So out of 6 sessions, we have 4 profitable, 2 no trades. We have shared the BTST Titan. The buying is at 3780, stop loss 3720, and the target is 3900. And for research 360, 10% off coupon I've already shared for our non-clients member here. So that will be all. Thank you everyone. Thank you Shivangi ma'am. I can see कि queries अभी भी आ रही हैं, but guys जैसा मैंने बताया कि हजारों लोग हैं, हजारों queries, we can't take them all in 30 minutes, but we'll be happy to take them up tomorrow morning because we have Shivangi ma'am once again tomorrow in the morning session. So thank you everyone. Thank you for joining in. See you tomorrow in the morning session at 9:30 a.m.